Hi everyone, a very good evening and a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Let's get started with the final session of our discussion of the additional practice question that has been released by CBSE. They have released 2 papers. This is the first one that we are doing. We'll be doing next week the second paper. So this is the third part. Let's quickly get started. As you guys know, the same set of instructions. ये पूरा पेपर 3 घंटे का है. The total weightage is 80 marks. It's completely based on how your paper of boards are supposed to be with exact section division. Section A, B and C we have completed. Yesterday we had in fact started doing section D also, but there was some technical glitch because of which we had to break the session in the middle. But no worries, section D, E and F, which is your 5 marker, 4 marker and map work, we will be finishing today. We have to do this in next 1 hour. So we are going to be on fire, my dear students. Let's get started. Let me quickly introduce myself. Bachcho, hi everyone. I am Ankana and I am your social expert for at Embibe. So on that note, we'll start with section D. In this session, we are ideally supposed to do section E and F, but D is left from yesterday, so we'll be covering D also. So let's start with the very first question. The very first question that was there, which was examine the significance and the key milestones of civil disobedience movement that took place in India during the struggle of independence. Now guys, please make sure to share the video with your friends. Let them know that we have started with the third part because this is a really important session. It gives you an overall idea of what to expect from CBSE in your board papers. तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एक आइडिया लो कि आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चंस को कैसे समझना है, कैसे प्रोसेस करना है. दैट इज व्हाट विल प्रिपेयर यू फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, राइट? And I'll quickly say hi to all my dear lovely students. Hi Amartya, hi Kanika. Who else do we have here in the session? और कौन-कौन से बच्चे आ गए हैं? Also, please make sure to invite your friends. Let them know we are having this discussion so that they do not miss on this. Okay, चलो ये वाला क्वेश्चन हमने एक्चुअली डिस्कस कर लिया था. हमने बात की थी की माइलस्टोन्स की, हमने बात की थी सिग्निफिकेंस की. तो हमें पता है कि मेकिंग ऑफ द सॉल्ट वाज वन ऑफ द मेजर की माइलस्टोन्स, राइट? हाय लीजा, गुड इवनिंग बच्चे. सो हमने देखा था कि गांधी जी स्टार्टेड विद द डांडी मार्च. सो द फर्स्ट की माइलस्टोन, फर्स्ट मेजर इवेंट, you guys, was the Dandi March, the beginning of the march, which was traveling for 240 miles. And then on the way, he kept on, mobilizing the people, informing them. Then, of course, there was repression and imprisonment. ठीक है, तो मैं highlight करते जा रही हूँ key milestones को. And then there was negotiation and outcomes. These were the major key milestones. So, first was the march beginning. Second big milestone क्या होता है? The big events, what changes the game, right? Second big milestone was how Britishers started pushing back, how they were arresting everyone, how they arrested Gandhi ji also. And the final one was when Lord Irwin contacted Gandhi ji to take back the movement and asked him to participate in the round table conference. ये तीसरा बड़ा milestone था, ठीक है? क्या हो गया अमर्त्या? why? Okay guys, also let's be focused. As I told you, we have got whole 3 sections to cover in a very short span of time, so we'll also not lose our focus, right? Significance का मतलब क्या होता है यार? Significance का मतलब होता है what is the importance. So it is basically asking that what is the importance, what were the changes and the impact of the civil disobedience movement. सबसे पहले बच्चे, after the non-cooperation movement, after a long time, mass participation at this scale had happened, and it had a very strong message and a very strong, you can say, resistance that was given to the Britishers. It was a full shocker for them, right? Then boycott of Britishers goods. So that was another very important thing, that their entire finances were shaken. We were boycotting their clothes, we were manufacturing our own clothes, we were manufacturing salt more than anything. It was very symbolic in nature. Then the spread of the nationalist ideas. Now see, because it's a 5 marker question, you can write maybe 3 small points here and 3 small points here. Or you can write few important milestones, not explain them very in detail, and then talk about 3 important things that
that came out of civil disobedience movement. It's completely up to you, but go ahead, not beyond 5 to 6 points in total to save time, क्योंकि उससे कितने भी ज्यादा पॉइंट्स लिख दो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, ठीक है. And then what was the legacy and the inspiration that was left behind? What was the message that was left behind? So it was a symbol of non-violent resistance, which definitely inspired a lot of future freedom fighters. ठीक है. Second question हमें दिया गया है, read the following excerpt about the right to protest in India and answer the questions which are given after that. The Constitution of India guarantees the fundamental right to protest, which is derived from the broader rights of freedom of speech and expression and freedom to assemble peacefully. However, this right is the subject to reasonable restrictions in interest of India's sovereignty. Violent actions during protest are in violation of citizens' fundamental duties, emphasizing that the right to protest encompasses only peaceful demonstrations. Okay, we have to examine the elements of satyagrah. सत्याग्रह के एलिमेंट्स को हमें जो है एग्जामिन करना है, which employed during the 20th century Indian freedom struggle in the light of the alignment with the right to protest granted by the Indian Constitution as mentioned in the passage. It is a difficult question. This question is something which I wouldn't say is very easy. आप देखो हमें एक एक्सर्प्ट, एक आप कह सकते हो एक पोर्शन दिया गया है एक आर्टिकल का लीगल सर्विस इंडिया से, जहां पे हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच के बारे में डिस्क्राइब किया गया. अब ये जो है ये प्रेजेंट में हमारे पास आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग, आफ्टर द रिपब्लिकन स्टेट दैट वी हैव गेन्ड, राइट. बट ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह, द वेरियस फीचर्स ऑफ सत्याग्रह which was actually taken up ahead in 20th century, which was a nationalist movement in India during the freedom light, in the light of their alignment with the right to protest granted by the Indian Constitution as mentioned in the passage. Here we have two angles. First, how people were fighting for this right is one way you can explain and approach that too. Second, how there was a lack of this right which was not at all given to us by the Britishers. So, because it's a difficult question, I'm going to move to the answer which has been suggested by CBSE as an exemplar answer, and from there we will try and understand the approach to this question when you come across such a question. जब आप एक ऐसे किसी सवाल के सामने आते हो तो कैसे उसका आंसर करना है, क्या पॉसिबली कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर राइट यहाँ पे जैसे हमें बताया गया है कि if you want to go ahead and have the right to protest, ठीक है, in order to have this right to protest, there are few things as a protester you should also ensure. कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे reasonable restrictions हैं जो आपको भी इंश्योर करने चाहिए एज अ प्रोटेस्टर. ये सवाल हमसे यही पूछता है कि एज अ प्रोटेस्टर किन चीजों का पालन किया था हमने, what were certain things that we did obey as a protester back at that time. For example, it is saying violence should not be there. ठीक है. For example, it is saying that it should be peaceful. For example, it is saying that you have to remember your fundamental duties as a citizen. So, बच्चे, first of all, we have to understand that Satyagraha when was launched, Gandhi ji always had the motto, be it civil disobedience, be it non-cooperation, be it Satyagraha. He always had the motto of being non-violent. He always had the motto of being inclusive towards everyone, right? ये question ज़्यादा important है, Lisa. Is that what you're asking? So we see that the elements of Satyagraha that align with the right to protest of present times is non-violence, peaceful protest, respect for human rights, inclusivity, emphasizing on dialogue and negotiation. We were open to all of these things. We were not doing anything illegal. For example, when a boycott of foreign goods happened, it was not against the law. People were in their capacity and not violating any law while doing any of those actions, while being assertive. It was a peaceful resistance that people were kind of protesting with. So we see that democratic values, freedom of speech and the right to dissent
which means the right to differ from what has been defined is what people practiced. Of course, there were elements where we went wrong. For example, act of civil disobedience that involved breaking laws or disrupting public order can be seen as conflicting with the principle of upholding the rule. But boycotting use of foreign goods, not so much, right? Additionally, satyagraha techniques that obstruct essential service or hinder functioning of government machinery may be deemed unconstitutional, which means where people stopped going to government offices when they were a government employee. So technically, you're breaking a law over there. So, bache, Lisa is asking if this question is important. Hi, Vikas. Good evening. Welcome to the session. No worries, bache. It's absolutely fine. I wouldn't say this question is important. This chapter is important for sure. Point is, it definitely is an example of if you get such a question in your exam, what will you do? So, ये question important है from the aspect of understanding that what will you do when such a question is given to you? How will you react to this? How will you approach this? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इसमें भी इंटरनल ऑप्शंस दिए गए हैं. क्वेश्चन कहता है अ थिंक टैंक हैज बीन गिवन द टास्क टू डिजाइन एन आउटलाइन टू मेजर हाउ सक्सेसफुल हैज द डेमोक्रेसी बीन इन एनी कंट्री. ठीक है, तो एक ग्रुप बनाया गया, एक थिंक टैंक. ठीक है, पीपल, अ ग्रुप हैज बीन फॉर्म. व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू इज सी एंड मेजर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, to what level democracy has been achieved in various countries. Discuss the key indicators that the think tank should consider while designing this outline and explain why these factors are crucial in assessing the outcomes of democracy. बच्चे बहुत simple है. ये सवाल एक बार देखने में आपको difficult लग सकता है. Now I want to tell you, CBSE this time in this particular additional practice paper has asked a lot of questions like UPSC. What do I mean when I say this? See, the concepts and the answer are very simple. You know these answers. ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है ये जवाब, आपको पता है. But the way the questions have been asked, you will feel that a ball has been thrown at you which you're not able to catch and it's going completely like a bouncer. तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या है, मुझे तो ये पता ही नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं है. Questions have been framed in a complex way, but the answers are simple. सवाल देखने में मुश्किल है, जवाब वही है जो चैप्टर में पढ़ा है. यहाँ पे what they have done is again applied the knowledge. They're asking you to apply your brains and your knowledge that you have gained. They're simply asking that what are the outcomes of democracy. When you want to measure achievement of democracy in any nation, what would you do? But how have they asked you? They said that okay, a group has been formed. This group has to examine different countries. So what are the outlines? What are the parameters that they should have and why should they have these parameters? But in any country, when you want to assess the outcomes of democracy, the parameters always remain the same. Accountability, legitimacy, transparency, then you have economic development, social development. All of these things become a factor. How many people are going to vote? Everything that will be mentioned in your outcomes of democracy. तो वैसे ही उनमें से कोई भी 5 outcomes, 6 outcomes you have to write and explain it in 2 to 3 lines that why is that important. Accountability, why? Because the government has to ensure, or let's say transparency, as simple as that. The government has to ensure that the citizens at all point in time are informed about why, what is happening and why is it happening in the truest, with the truest information. That is maintaining transparency, which helps the people build the trust. Second, be truly a part of the decision making process. है ना, अगर सरकार सही तरीके से आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगी कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तभी आपका सरकार पे ट्रस्ट भी बनेगा. दूसरा, ट्रांसपेरेंसी सच में रहेगी और तभी आप एक डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी बनोगे. सरकार अगर कुछ कर देगी अपने आप से, तो आप कैसे ट्रूली डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हो. अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है. हाउ पीपल हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट. ये सारे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं. इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो, एनी 5. ठीक है, तो जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंटिल अनलेस द इलेक्शंस आर ट्रूली हैपनिंग, इट्स नॉट डेमोक्रेटिक. ठीक है, सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, विच आई वाज टेलिंग यू, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, हेल्पिंग एवरीवन ग्रो टुगेदर, राइट, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इन जनरल सोशल इक्वालिटी, ये सब कुछ देना, राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करना. ठीक है, पावर्टी को रिड्यूस करना. व्हेन आई वाज टेलिंग यू सोशल डेवलपमेंट, दिस इज लाइक अ सोशल डेवलपमेंट एंड दिस इज लाइक एन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. ये सब इंश्योर करना. रूल ऑफ लॉ इंश्योर करना, विच मीन्स द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन.
तो ये हमारे बुक में वैसे ही बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, लेजिटिमेसी, रेगुलर इलेक्शंस, 50 चीजें हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिख दो, कोई भी रेलेवेंट पॉइंट लिखोगे आपको आंसर में आपको मार्क्स मिलेंगे। जस्ट इंश्योर यू आर मेंशनिंग 5 डिफरेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनिंग दोज पॉइंट्स प्रॉपरली, ठीक है। Who is responsive government? Responsive government is the one which responds to the requirements and the needs of the citizens. If they don't, then the citizens have the right to change them in the next election. And they're aware of this, right? इस चीज का एहसास उन्हें है ना सक्षम चौधरी? And that is why they will want to work for the people so that they get re-elected again and not lose the power. That government which listens to the requirements of the citizens and act on it is a responsive government. ठीक है? विकास, आपके बोर्ड का पेपर बच्चे समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इट शुड स्टार्ट। अभी स्केड्यूल नहीं आया है, आई थिंक बाय जनवरी इट विल बी आउट। ओके, हाय यमुना गौड़ा, वेलकम टू द सेशन। हाय पुष्पलता, गुड इवनिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री एंड फेयर मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट। फ्री और फेयर मीडिया एक बहुत बड़ा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से सवाल है, इस पे कमेंट करना है। तो मैं आपको कल भी आई थिंक आई डोंट नो व्हाई आई रिमेंबर दैट वी डिड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, बट एनीवेज कमिंग बैक टू इट, इवन इफ वी डिड नॉट, देयर इज अ चैप्टर दैट यू हैव रेड इन योर चैप्टर और इन योर क्लास 8th or 7th, I think I'm forgetting, which is about media, understanding media and advertisement unit में. There you have read a lot about media and democracy. If you remember any bit of it, you will remember, it will be very helpful for you over here. If not, that is not also a problem. In general, बच्चे democracy में क्या चाहिए होता है and what role does media play? Media makes you aware. Media brings you the information. Media helps highlight and voice out the problems, the grievances of citizens. Media grabs attention, right? And that is why media needs to be very true to the citizens. And that is how it forms the fourth pillar, a very important pillar of democracy. Media अगर सही है, पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, ट्रू इन्फॉर्मेशन लोगों तक ला रही है, तो वो देश के सिटीजन्स अवेयर रहेंगे, अपनी ओपिनियन सही तरीके से फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, विच विल ऑल्टर द गवर्नेंस, द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड मेक इट ओनली स्ट्रॉन्गर. Every individual should experience all the compulsory rights. Absolutely, Amartya. The fundamental rights should be granted. There should be a house to protect. That is a good democracy, where there is somebody to watch and protect and safeguard the rights of the people. That is also true. ठीक है, तो मीडिया के केस में आपको कमेंट करना है. तो बच्चे आपको 5 to 6 पॉइंटर्स देना है. Why media is important, what media does, and hence why it becomes important, and how is that related to democracy. Because you have to justify how it becomes a result of outcomes of democracy. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि democratic government needs to be accountable, responsive and a legitimate government, right? It needs to ensure that it has enabled its citizen to participate in decision making process. By the way, you can write these points in the previous answer as well. The first point, the second point, ये सब आप अपने previous answer में भी लिख सकते हो. It has to make sure that its citizens are informed and making informed choices. It is important that in a democracy, citizens are informed and are making informed choices. It needs to have an accommodating, varied perspective. And media as the fourth pillar helps in ensuring this. So maybe these 2 points I would personally not write. I would maybe focus a little on responsive and legitimate. Okay? I would start with this as an intro. Why is media important? And what role it plays in informing the citizens. Okay? And then I will talk about that citizens have to make the decision making process, which will be done if they have the proper information, proper insights. तो यहाँ से भी वो बहुत important हो जाता है, यहाँ से भी बहुत reference मिलता है. ठीक है, चलो next question है, describe circumstances that drive individuals to seek loans from informal sources of credit. ये काफ़ी simple है, मनी एंड क्रेडिट का क्वेश्चन है ना. सिद्धार्थ नायर, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम. हाय प्रशांत. सो बच्चे, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द मनी एंड क्रेडिट सेक्शन. इट सिंपली इज आस्किंग दैट वी नो दैट इनफॉर्मल सेक्टर ब्रिंग्स इन सो मेनी प्रॉब्लम्स.
इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे इश्यूज इनफॉर्मल लोन्स के साथ लोगों की ज़िंदगी में आ जाते हैं, फिर भी लोग इनफॉर्मल लोन्स की तरफ क्यों स्ट्राइव करते हैं, क्यों लेने की कोशिश करते हैं? व्हाई डू दे वांट टू बिकम अ विक्टिम ऑफ दोज इनफॉर्मल लोन्स? व्हाई डू दे सफर? हाई इंटरेस्ट रेट, नो प्रोटेक्शन, व्हाई? बहुत सिंपल है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट याद करना है ना? फॉर्मल सेक्टर में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एवरीथिंग इज देयर, प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशंस हैं, but despite of that, the biggest challenge that people face, what is that? So we have to first identify who are the people who take the loan from informal sector. Mostly the poor people, the village people, people who do not have a collateral, people do not have documents, people who are not literate. So these are the challenges. They do not have a collateral. Loan taking process takes time in banks. They do not have time. They need immediate loans. They do not have proper documentation to finish it. They are not literate, so they are a little afraid. Maybe banks are not reachable for them. A lot of villages and places do not have banks close by, so they end up relying on these people. So for all of these reasons, ठीक है, unavailability of collateral, absolutely. तो ये ऐसे 5 चीज़ों से आप एक्सप्लेन कर दो. 5 points you have to remember to write. तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? And guys, don't write these short points. ठीक है, इसको थोड़ा सा इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऐसे एक में मत लिखो, मेक इट एटलीस्ट 1.5 स्टेटमेंट. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, व्हाट आई कैन राइट इज द प्रोसेस ऑफ लोन टेकिंग इज वेरी ऑफ लोन अप्रूवल एक्चुअली. The process of loan approval is very time taking in formal sectors. And there may be an immediate financial requirement for the loan for the borrower. So they end up taking loans from informal sector. What have I done? I have written 2 lines and I have explained the point. So either you can put this as a heading and write 1 line of explanation, or you take 2 lines and explain it and underline this point that you are trying to make. But don't just write these pointers as a major advice. At least elongate it to 1.5 to 2 lines and dedicate it to each statement. So that in 5 statements you are writing 10-liner answer, because you have certain word limits also for 5 marker question. अब जैसे absence of collateral, so you can write a lot of times poor farmers, illiterate people, landless laborers, they rely on loans from informal sector because they do not have any collateral to present to the formal sector, which is a part of the terms of credit. So again I have written 2 statements and none of that is nonsensical. Every part makes sense. I have just explained this point. Then unavailability of documents. Poor people who are illiterate do not always have proper documentation. They come from a background where they do not understand the importance of documentation. Hence, the terms of credit will not be possible to meet for them, because of which also they end up relying on the informal sector. Then, informal economy and irregular income. Their loan may not be approved from formal sector because the background is such that they don't show up as a promising candidate to return the loan. So because of that also they sway towards the informal sector. Limited restricted access to formal sources. So cooperatives, banks are not nearby and it's not possible for them to always travel long distances to reach to the bank. So they end up going and contacting the people which is in the nearest approachability, which is your informal sectors, the money lenders of the or the landlords of the villages. ऐसे सारा कुछ भी हम लिख सकते हैं. Next question is, state the potential negative economic implications that would arise in an economy if the absence of the concept of credit is there, which means, देखो ये फिर थोड़ा सा complex question लगेगा. It might seem like a complex question to you, right? Siddharth, does it seem like that? Om Prakash, good evening, welcome. Hi Prashant. It's very simple. It is simply telling you if the activity of giving credit, if the activity of giving loans is stopped
it will also affect in a negative way the economic growth of a country. Why? Loan से क्या क्या फायदा होता है? We have read this. What are the benefits that loans will provide to you? With loans, people go for higher education, which basically establishes humans with being more resourceful and hence transforming into better human capitals. With loans, new opportunities open for people to start new businesses, which ultimately will result in more employment, in more economy generation. With loans, it enables people to take more opportunities and hence contribute irrespective of their background into your into the economy of the country, start their small scale businesses, be self employed. With loans, people, you can say, I just did think of a point and it just slipped out of my mind. What else? What are the benefits of the loans? Yes, of course, if people don't take loans, the bank will not be functioning, and bank adds on a huge circulation to in ensuring that depositors and borrowers both are benefiting from there, right? So loan activities, if are not there, a lot of things will get restricted. तो लोन एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है. इट्स अ वेरी जनरल आंसर और यहीं से आप लिख दोगे. ठीक है. लोन्स लोगों को घर लेने में, गाड़ी लेने में इनेबल करता है, वो रुक जाएगा, पढ़ाई रुक जाएगी, नए काम शुरू नहीं होंगे, नए काम शुरू नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी. ये सारी चीजें हैं. तो लिमिटेड एक्सेस टू फंड्स फॉर स्टार्टिंग बिजनेस और मेकिंग इन्वेस्टमेंट विच विल डेफिनेटली हैम्पर द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Limited capacity of savings. People will not save more because they will not be getting extra interest on it, so not good for depositors. Limited ability to finance education and skill development. People will not be educated, hence they will not get better jobs, not transform into better human capital. Again, economy of the country will get affected. Limited ability to purchase high worth items, cars, houses. कैसे लेंगे घर गाड़ी? Limited financial flexibility and convenience. और एनी अदर इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट इफ यू फील, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. क्वेश्चन 33, अब ये दो फिर से सब में देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में यू विल मोस्टली हैव इंटरनल चॉइसेस इन ऑल दोस क्वेश्चंस. ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चंस में. तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दैट रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिगार्डिंग देहरादून एक्सप्रेसवे एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज इट. So the Dehradun Expressway is all set up to open to the public by the end of 2023. It would reduce the travel time between the two cities from 6 to 2 hours. The 210-kilometer long expressway will start from northeast Delhi and pass through Bagpat, Shamli, Muzaffarnagar, Saharanpur and Dehradun. The lack of 20-kilometer stretch will pass through the eco-sensitive zone of Rajaji National Park, where Asia's longest elevated wildlife corridor of 6 lanes and 12 kilometers will be constructed. That includes a 340-meter Datkali tunnel. The 340-meter long tunnel near Datkali Temple, Dehradun, will help reduce the impact on wildlife, and multiple animal passes have been provided in Ganeshpur Dehradun section for avoiding animal vehicle collisions. Now the question says, analyze the development of Delhi Dehradun Expressway in terms of its impact, negative and positive. It can be negative or positive. If you feel there is negative, write negative also, write positive also. If you feel it is only negative, then write 5 points. If you feel only positive, write 5 points. On economic growth, environment and goal of sustainable development. So I'm going to take a pause of few seconds and let you read this paragraph once. I would want you guys to go through this paragraph once carefully. इसको ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लगता है आपको. यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है. आपको एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुई है. ठीक है, और वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या लगता है ये अच्छा है या नहीं है, क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पॉसिबली हो सकते हैं इस चीज़ को बिल्ड करने के. And if you have any idea
If you have any inputs, go ahead definitely and write it down. Guys, this is also an application based question. यहाँ पे resource development, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जनरल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, बहुत कुछ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, जो यहाँ पे आपको लिखना, मतलब यहाँ पे मेंशन करना चाहिए आइडियली. Any inputs from anyone? Hi Arshad. ये लोन्स वाला है अमरत्या, इनफॉर्मल लोन्स वाला लास्ट पॉइंट अगेन प्लीज. इनफॉर्मल लोन्स में लास्ट पॉइंट. लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. बच्चे अमरत्या बताया था ना मैंने कि लोगों के पास एक्सेस नहीं होता, बैंक्स नहीं होती हैं कई बार दूर दूर तक, कई सारे गांव में, तो लोग पहुंच ही नहीं पाते. they'll have to travel a very long way to reach to the banks. That is why they end up relying on the local money lenders. बैंक तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है ना. हाय गगनदीप, गुड इवनिंग, वेलकम. चलो जी, तो थोड़ा अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि आप में से किसी ने कोई इनपुट नहीं दिया है, विच आई एम वेरी शॉक्ड. यहाँ पे आपको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी बात करनी है, एनवायरमेंट की ग्रोथ के बारे में बात करनी है, दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना है, दोनों चीज पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो इनपुट्स देना ही. इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट. इट्स कनेक्टिंग प्लेसेस, and the more the transportation and infrastructure is strongly built, the better the system is, right. Rajat Kumar, hi, good evening. तो टाइम ट्रैवल रिड्यूस हो रहा है, ट्रेड और टूरिज्म बूस्ट होगा, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होगी वैली में, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में पहुंचेंगे हम, कंस्ट्रक्शन जो है वो खुद जनरेट करेगी एम्प्लॉयमेंट, इट विल हेल्प पीपल बी एम्प्लॉयड, राइट. एब्सोल्युटली, लीजा वेरी गुड. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, रिड्यूस होगा ट्रैवल टाइम और ट्रेड बूस्ट होगा. रही बात एनवायरमेंट की बच्चे, डेफिनेटली इट विल क्रिएट पोल्यूशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स, इट विल डैमेज द एनवायरमेंट, इट विल अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांटेशन, बट इट ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव थिंग. डेवलपमेंट इज हैपनिंग स्लाइटली इन अ सस्टेनेबल वे. We are not compromising on cutting the jungle or hampering the wildlife or running it from there, but we are lifting a corridor. So we are developing, but we are also trying not to hamper the ecosystem altogether. ये positive point भी है, ठीक है. कंसर्न्स को अकाउंट में लिया गया है, वाइल्ड इसलिए कॉरिडोर्स बनाए गए हैं. व्हीकल एमिशन से पोल्यूशन होगा, वो तो पता ही है. ग्रीन कंस्ट्रक्शन मेथड्स जो हैं इन प्रॉब्लम ऑफ कार्बन एमिशन को सॉल्व कर सकती हैं. वी कैन प्रॉबली ऑल्सो पुट अप सम रेस्ट्रिक्शंस वेयर वी से कि hey, only green vehicles, only electrical vehicles can go on this, but that would be not justified. चलो, as per the Britannica dictionary, तो ब्रिटेन की डिक्शनरी के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो है, वेरी नाइस. When the world is seen as a community in which people are connected by computer, television, and all depends on one another, the world becomes a global village. तो एक डिक्शनरी में ग्लोबल विलेज का मतलब बताया जाता है कि पूरी दुनिया एक या दूसरे तरीके से कनेक्टेड है विद द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट वी हैव, राइट. जय श्री राम, गुड इवनिंग. अकॉर्डिंगली they elaborate on the role of air transportation in the making of the world as a global village. Now what you have to do over here is explain what is the importance of air transportation. तो ये आपका बच्चा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सवाल है, आपको सीधे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन बतानी है.
Lisa, which point do you want me to answer? One second, I'll just have a look at it. Sustainable development, green construction methods could solve the problem of carbon emission. बच्चे, जैसे when the construction is being done, there are materials like concrete. If those materials are being used, it absorbs more heat, it releases more heat. क्या मटेरियल हम यूज करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से जो वहाँ कार्बन एमिट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट वे व्हाट इज हैपनिंग, डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन अ सस्टेनेबल वे, और जो कार्बन एमिशन है वो कंट्रोल होगी, रिड्यूस होगी, है ना लीजा? ठीक है. हाँ जी अमृता, टाइम रिड्यूस होगा तो भी कार्बन एमिशन कम होगा. हाय दिवाकर, good evening. Gagandeep, guys, whenever you ask me to repeat something, please make sure to mention what do you want me to repeat, because a lot of times I look at your messages sometime later, or I've already done a lot of things, so I'm not very sure of what really to repeat. चलो, coming back to this question, air transportation के benefit की बात करें तो सबसे पहले connectivity. पहले if I wanted to travel to US, it would take so long and it would be so expensive that I couldn't have imagined. So first, air transportation has definitely reduced the whole travel time, making the whole world very, very accessible, very close to each other, like a part of a global village. With the advancing technology, accessibility to transportation, to traveling has become more and more easier, which is connecting more people, more exchange, more goods and services are being exchanged. इससे दो points बना सकते हैं. With more technology being adopted and a cleaner technology being adopted, it is also becoming slightly, ठीक है, it is also becoming slightly affordable. तो जब affordable होगा तो ज़्यादा लोग travel करेंगे, ज़्यादा लोग connected हो जाएंगे, है ना? तो accessibility, international trade जो है, goods and आपका trade जो है वो दोनों आपका वो हो रहा है, exchange हो रहा है. boosting tourism, ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा एक्सचेंज होगा, ठीक है. अफोर्डेबिलिटी भी इसमें बहुत बड़ी चीज़ है. एडवांसिंग बिजनेस एंड डिप्लोमेसी, मोर कंट्रीज, जियोपॉलिटिकली ग्रोथ होगी. एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन एड एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स. द बेस्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज, हाय आयुष सिंह, that guys, when there is any calamity, any natural disaster, the first response is always sent from the air. Areas which are difficult to access, areas where let's say some flood has occurred, whatever has occurred, in those crises, the rescue, food, everything, how is it provided? It is provided with the help of air, है ना? तो ये सारी चीज़ों को देखो, आप देखो, this is a 5 marker answer. It has been properly explained. So maybe you can cut down a little on the explanation, but make sure that with headings you're also doing the explanation. तो अब E और F सेक्शन के साथ शुरू करते हैं. इस बार जो हमारे केस स्टडीज दिए गए हैं बहुत छोटे छोटे दिए गए हैं. दैट्स अ गुड न्यूज, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इन योर एग्जाम ऑल्सो इट विल बी दिस स्मॉल. सिंपल सी चीज है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA, विच मीन्स एग्रीकल्चर which is helping in not affecting or hampering the climate, in fact helping the ecology, environment and the ecosystem develop, ठीक है, get better. Okay, oh sorry Ayushi, my bad, I just by mistake read it Ayush. So climate smart agriculture हो गया, which is an approach that helps guide actions to transform the agri-food system, which means the food which is generated from agriculture, towards green and climate resilient practices, which means climate friendly practices, as in not doing a lot of irrigation which will deplete the water table, not putting a lot of fertilizers which will destroy the fertility, natural fertility of the soil. ऐसी सारी चीज़ों को, है ना? अर्शद, हाय बच्चे, गुड इवनिंग. It supports reaching internationally agreed goals such as Sustainable Development Goals and Paris Agreement on Climate Change. तो एग्रीकल्चर से भी बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट अफेक्ट होता है, सॉइल, एयर, वाटर.
तो उस सारी चीज़ों पे हमने अग्रीमेंट किया है कि उसको कैसे बेटर बनाना है। वो सारी चीज़ें हम CSA क्लाइमेट सस्टेनेबल स्मार्ट एग्रीकल्चर से अचीव कर सकते हैं। So CSA supports the Food and Agricultural Organization strategic framework of 22 to 23 based on 4 betters. What are the 4 better things? What are the 4 things we are trying to get better with? Better production, better nutrition, better environment and better life for all, leaving no one behind. So we are trying to work on these things, right? Hi Rahul Yadav, good evening bachche, welcome. Ayushi, all the best. So बच्चे अब इसी के साथ we'll start with questions. We'll have 3 questions from each of these case studies. पहला कह रहा है कि a CSA expert suggested increased production and consumption of millets in India. Justify. Why do you think the person suggested production of millets? Now बच्चे, this is agriculture and this is resource and development merged together. Both your knowledges are being tested in this question. एक इंसान ने बोला कि आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा अगर आप मिलेट्स प्रोड्यूस करोगे। क्यों होगा? दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको बताना है क्यों हो सकता है मिलेट्स से बेटर। ओके दिवाकर, नो प्रॉब्लम। कोई बताएगा मुझे मिलेट से क्या फायदा होगा? मिलेट से कैसे हम हेल्प कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को? फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प यू विद एन एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे पल्सेस लिखा होता तो पल्सेस से मैं 2 चीजें बता सकती कि पल्सेस जो हैं वो फर्टिलिटी रिस्टोर करती हैं सॉइल की, सो इट्स डेफिनेटली गुड एंड प्लस इट्स हेल्दी। तो यहाँ पे जो 4 गोल्स है उनमें से हम 2 गोल्स तो बेटर एनवायरनमेंट और बेटर न्यूट्रिशन को अचीव कर पाएंगे, प्रोडक्शन बड़े आराम से हो जाता है, तो ये इस गोल को अचीव कर पाएंगे। इसको 4 तरीके से मैं जस्टिफाई करती, बिकॉज इट्स हेल्दी, तो सिर्फ इसलिए। बच्चे मिलेट्स जो हैं ऑफ कोर्स वेरी हाई इन न्यूट्रिशनल वैल्यू विच विल डेफिनेटली अचीव द गोल ऑफ बेटर हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन। They are rain fed, hardly need irrigation and hence can be grown in arid and semi-arid regions also. So we are achieving multiple this thing, better environment, better production, better nutrition and then it is also helping the farmers. So no one, neither the producer nor the consumer is left behind. That is why it totally makes sense. इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रहा है, तो बहुत कमर्शियली ग्रेन जो है वो सब्स्टिट्यूट करती है पुअरर नेशंस को, तो फार्मर के लिए भी अच्छा है और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, पल्सेस अगर होता तो हम क्या करते, वो पूछ रही थी मैं, है ना जय श्री नाम, बट अभी मिलेट्स पूछा था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेसेसिटी टू थिंक ऑफ CSA इन इंडिया? हमें क्यों क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडिया में चाहिए? भैया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडिया में नहीं, हर जगह चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द गोल्स दैट इट हैज, which is a overall goal with a balanced idea, है ना? आदित्य कुमार सिंह, गुड इवनिंग, वेलकम। बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी, सबका बैलेंस है, इसलिए बहुत अच्छा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बच्चे, व्हेन वी आर डिग्रेडिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, at one point it will not look after the boundaries, it will affect the entire world. So in order to achieve the global goals of a better sustainable development, developed future, not just India, every country should participate and any other such point you can write which makes sense. तो यहाँ पे important है because of the changing climate due to global warming. Yeah, to achieve the global goals, because the pollution, the degradation doesn't look after the boundaries. It will impact everyone in the same capacity. आखिरी question है suggest 2 methods through which India can shift towards CSA. हम कैसे shift कर सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ? एक तो तुम्हें पहले आंसर में ही जवाब मिल जाएगा, ग्रोइंग प्रोडक्ट्स लाइक मिलेट्स, पल्सेस विच आर बजट फ्रेंडली but can be but the producer can be compensated well because of its nutritional value, very good for the consumer. It is environmental friendly and does not leave anyone behind. So making the choice of the correct products, सबसे पहले ये हो जाता है। दूसरा, अवेयरनेस, नॉलेज, जब आप लोगों को अवेयर करते हो, सारे पीसेस टुगेदर इंफॉर्मेशन के देते हो, दे मेक बेटर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, राइट?
एक्स आदि फॉर यू, हाय बच्चे, हाय प्रशांत जी नायक, गुड इवनिंग। सिमरन कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना सेशन का रिकॉर्डिंग। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हम यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स, हाई इरिगेशन चीज को यूज करने वाली चीजों को बंद कर सकते हैं, स्मार्ट क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं जो कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा न्यूट्रिशियस हो, शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स। ऐसा कुछ भी सजेशन आप दे सकते हो जब तक वो फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं बच्चे। पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड डायनामिक्स can have an enormous effect on the prospects of poverty reduction and sustainable development. Poverty is influenced by and influences population dynamics, including population growth, age structure, and rural-urban distribution. All of this has a critical impact on a country's development prospects and prospects for raising living standards for the poor. Investment in better health, including reproductive health, are essential for individual security and for reducing mortality and morbidity. Morbidity क्या है? Condition of suffering from a disease or a medical condition, which in turn improves a country's productivity and development prospects. तो हमें हेल्थ एजुकेशन सबके बारे में ज्ञान दे दिया गया है यहाँ पे। आपको टाइम चाहिए ये पढ़ने के लिए तो पॉज करके ले लो। We'll look at the first question. Always in case studies or such kind of questions, go ahead and read the question and then reread the paragraph. It will help you see what information you need to focus on, what points you really need to understand. तो पहला question कह रहा है, how does investing in improved healthcare infrastructure contribute to the reduction of preventable disease and chronic conditions? You may have the answer here, you may not have the answer here. ठीक है, okay. So when we are investing, we are of course focusing on mortality as well as morbidity. ठीक है, और जो हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में. बट व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर डन, पीपल हैव एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर, राइट? पीपल हैव एक्सेस टू even the treatments which they cannot afford. There is more research and development, and health and education are two factors which always leads a country towards a better economic development goal. केस बेस्ड कर रहे हैं बच्चे. जूनियर हाई, वेयर वर यू? काफी देर से ज्वाइन किया सेशन. तो बच्चे, इन्वेस्टमेंट बेटर हेल्थ केयर के लिए लोगों को एक्सेस देती है, वैक्सीनेशन, प्रीनेटल केयर, ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीजेस. ठीक है, इससे और भी क्या होता है जो हमने बात की कि प्रिवेंटेबल डिजीजेस, मोर्टालिटी और क्रोनिक कंडीशंस, मॉर्बिडिटी, दोनों ही हम एलिमिनेट कर पाते हैं या रिड्यूस कर पाते हैं. अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ट्रेंड एंड पॉवर्टी रिडक्शन. जो पॉपुलेशन ट्रेंड है और जो पॉवर्टी रिडक्शन है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? एकदम से सन्नाटा छा गया, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है. या तो सब समझ आ रहा है या तो आप थक चुके हो. मुझे जो भी सिनेरियो है बता दो. तो पॉपुलेशन ट्रेंड्स और डायनामिक्स कैन हैव एनॉर्मस इफेक्ट ऑन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हाउ? पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है? एडुकेटेड पॉपुलेशन, बेटर हेल्थ केयर पॉपुलेशन, इन्वेस्टेड इन ऑन बेटर प्लान्ड पॉपुलेशन. When all of these things are happening, people are transformed into better resources. They are in better health, which will only help in contribution to the economy. ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, पॉपुलेशन ट्रेंड को जब आप ऑल्टर करते हो तो वो पॉवर्टी को ऑल्टर करता है. तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन एक्सर्ट कर सकती है कंट्री पे आपका लोड, जैसे कि फूड, वाटर, लैंड सप्लाई करना उनको. एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, पॉवर्टी बढ़ सकती है. इसका एक पॉजिटिव तरीका हम क्या लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को जब प्लान किया जाए तो पॉवर्टी घटाई जा सकती है जब इन्वेस्टमेंट आपका हेल्थ और एजुकेशन पे की जाती है. ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस बेस. पॉवर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डायनामिक्स इंक्लूडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन. एनालाइज द स्टेटमेंट एंड हाईलाइट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी. बच्चे, एज द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पहले आंसर में भी हमको समझ आया, पॉपुलेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ द नेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, इफ द पॉपुलेशन इज नॉट रिसोर्सफुल, इट विल बिकम अ बर्डन ऑन द कंट्री. पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है,
ठीक है, इट इज डिफिकल्ट एक्चुअली. कोई बात नहीं सिमरन, इट्स ओके. Investing in improved healthcare infrastructure helps reduce preventable diseases and chronic conditions by providing better access to medical. सिमरन एक्चुअली आपका जवाब बिल्कुल सही है. ओके जूनियर, द बेस्ट वे इज टू फॉर्म कनेक्शन. सबसे पहले जो दिया है आर्टिकल केस बेस्ड, जो केस दी गई है उसको अच्छे से पढ़ो, प्रोसेस करो, इन्फॉर्मेशन समझो, देन गो रीड द क्वेश्चंस. Questions will be the guideline, will be the guiding, factor of what are the factors you need to better understand in the case. Then form a connection between which knowledge piece, which chapter, which concept is the case based related with. ये सारी चीजों से, ठीक है. तो अब ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पावर्टी और पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है. यार जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो गरीबी भी बढ़ेगी. अगर वो पॉपुलेशन को अच्छे से आपने ट्रेन नहीं किया, उसको रिसोर्सफुल नहीं बनाया, तो हमें क्या ध्यान रखना है, पॉपुलेशन ही वेपन है, पॉपुलेशन ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है. उसको आप रिसोर्सफुल बनाओगे तो आप पॉवर्टी कम करोगे, अगर रिसोर्सफुल नहीं बनाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो पॉवर्टी बढ़ाओगे. ये म्यूचुअल रिलेशन है. पॉपुलेशन जो है, हमने पॉपुलेशन चैप्टर और पॉवर्टी एज अ चैलेंज दोनों क्लास 9th में पढ़ा है, वो भी अप्लाई करो. पॉपुलेशन एसेट भी हो सकती है, पॉपुलेशन बर्डन भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन कैसा है, और वही पॉवर्टी को अफेक्ट करता है. तो पॉपुलेशन कैन स्ट्रेन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोटेंशियली इंक्रीजिंग पॉवर्टी. एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन अफेक्ट्स लेबर मार्केट्स एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम विच कैन इम्पैक्ट पॉवर्टी लेवल्स. Rural urban distribution determines access to essential services and economic opportunities, further influencing poverty rates. Poverty can contribute to specific population dynamics such as high fertility rates and limited access to healthcare, perpetuating the cycle of poverty. ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ठीक है जूनियर, नहीं समझ आया? चलो बच्चों, आखिरी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं. We any which ways don't have a lot of time. I have to close the session by 8 o'clock. So I'll just take 3-4 minutes extra. तो ये पढ़ के मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दिखा देती हूँ. जहाँ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ दूंगी. ये बाकी लाइंस जो है वो गांधी जी के एड्रेस से है, जो उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में की थी आपको 1942 8 अगस्त को, आउटलाइनिंग हिज प्लान ऑफ एक्शन इन हिंदुस्तानी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. You may take it from me that I am going to strike a bargain with the Viceroy of Ministries and the like. I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom. Maybe he will propose the abolition of salt tax, the drink evil, etc. But I will say nothing less than freedom. Here is the mantra, a short one that I give you. You may imprint it on your hearts and let every breath of yours give expression to it. The mantra is do or die. This is the speech where he said that. We shall either free India or die in the attempt to do so. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. Every true congressman or woman will join the struggle with an inflexible determination not to remain alive to see the country in the bondage and slavery. Let that be your pledge. Keep jails out of your consideration. Okay, so let's quickly look at the 3 questions that we have over here. Explain any key impact that Gandhiji's rejection of striking a bargain with the Viceroy of Ministers and the like had on the people participating in the freedom struggle. It gave them a stronger belief that there is no alternative option, that the leader is not going to betray them. It encouraged them more, brought in more strong feeling of a nationalism in their hearts, motivated them further ahead, right? So people joined the freedom struggle with stronger determination and pledged not to see anything else, not let the Indians be slave in the hands of Britishers anymore. वो trust build किया उन्होंने. ये वाला काफी आसान है वैसे. How did this mantra differ from earlier strategies employed in the struggle for independence? Earlier, maybe the leaders were ready to negotiate. But this time it was very clear that either people are going to sacrifice their life or they are going to attain freedom. There is going to be no second guessing about the fact that people were ready to go all in. And that is the promise that has been showed over here. It was complete freedom. There was no negotiation, no dominant status.
तो ये मूवमेंट अचीव करती थी, एम करती थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे, कोई कंसेशन, कोई पार्शियल फ्रीडम, कोई डोमिनेंस स्टेटस नहीं था. द मोटो वॉज वेरी क्लियर, डू और डाई, विच वॉज अ ग्रेट clear ultimatum to the Britishers that either they leave or they'll have to kill the Indians or the Indians will kill them. So it was a very strong message which earlier did not really exist before this. Take it? Last and final question. Discuss the economic context and political climate that led to the adoption of do and die mantra. Here you can talk about the failure and initiatives. You can talk how Satyagraha was started, how a non-cooperation movement was started, how civil disobedience movement was started, how Quit India movement was started, how they failed, what were the shortcomings, and how finally we reached at this place. So you can say that it was because of the discontent of the Indians, the harsh conditions that people were in. The climate that India had was very intense. People were now getting impatient. People wanted independence more desperately, more than anything else they did in their life. And how the non-violence, civil disobedience and all of these movements had only led to people understanding what they are capable of achieving. NCM, CDM, इन सबसे लोगों में उम्मीद जगी थी, उनको समझ आया था कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है अचीव कर पाने का. फाइनली गाइस, मैप के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई का होता है, विच इज फ्रॉम हिस्ट्री. इन आइडेंटिफाई यू विल बी गिवन द पॉइंट्स एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेस. पहला कह रहा है कौन सी जगह है जहां पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. विच इज द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड. पॉइंट ए पे है. Name the point for me. Come on, quick. 1927 Indian National Congress where was held? Was held at this place. This is 1927 का कांग्रेस. कौन सी दो जगह है ये? Can you quickly identify it for me? हाँ बच्चे, सिमरन ऑफ कोर्स नहीं होगा. मैंने जैसे बताया मुझे क्लास एंड करनी है बिकॉज अनदर टीचर हैज टू टेक द क्लास. 8 बज गए हैं. That's why I'm kind of rushing through the final discussion and not having a proper discussion but giving you the approach. Can anyone answer this for me? मैं इसके लिए वेट करूंगी और यहाँ पे जाती हूँ. आपको इन सारे पॉइंट्स को भी मार्क करना है. एक डैम जो रिवर सतलज पे बना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन नॉर्दर्न इंडिया, सर्दर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो ये ट्यूटिकोरिन है, ये नोएडा है, ये आई थिंक भाखरा नंगल है. और न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तारापुर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अमृतसर एंड मद्रास. वेरी गुड, वंडरफुल. ठीक है. तो ये हमारा आंसर जो है ये अमृतसर है और ये मद्रास है. और आखिरी वाला बच्चा भाखरा नंगल डैम, यहाँ पे पॉइंट होगा. नोएडा दिल्ली में बेसिकली. तारापुर आखिरी वाला है न्यूक्लियर. और ट्यूटिकोरिन सबसे साउथ ईस्ट आपका जो जगह है वहाँ पे. अब जो है कल हम दूसरा सेशन, एक नया चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर गो हैड, रजिस्टर योरसेल्फ. प्रिंट कल्चर शुरू होने वाला है तो अपने आप को सेशंस के लिए रजिस्टर कर लेना. एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल. बहुत सारा डिस्कशन हो गया है आज, तो अब मैं बाय बोलने जा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू मूव आउट सो दैट समबडी एल्स कैन स्टार्ट टेकिंग द सेशन. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो आई विल सी यू गाइस टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड यू गाइस मेक श्योर टू रजिस्टर योरसेल्व्स. कल 7 बजे मिलेंगे. टिल देन stay tuned and keep imbibing. Take good care of yourselves. Good night, you guys. Keep imbibing. We believe in you.